Hello and welcome everyone to yet another YouTube live at the Indie Football Podcast. Today we decided to discover or rather cover something जो हम so far नहीं कर रहे थे. In the world of football later this month, there is going to be a FIFA Women's World Cup 2023, which is all set to take place between 20th July to 20th August in Australia and New Zealand. श्रेय भाई, अगर आप फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी फॉलो करते हैं, जो मुझे पता है आप करते हैं, आपको याद Yes. होगा कि वन ऑफ द इन 2015 it was when the cricket world cup also happened in Australia Yeah. and New Zealand. फुटबॉल But भी. या हाँ. फुटबॉल भी हम्म, हुआ है. तो हम्म, फुटबॉल जो विमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप है जो अभी आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी द 9th एडिशन. एंड भाई, yes. प्रीवियस एडिशंस के बारे में आपको क्या पता है श्रेय भाई? एक्चुअली इतना पता नहीं है क्योंकि मैंने इतना फॉलो नहीं किया था स्टार्टिंग में. हाँ, बट लाइक 2019 से किया था. लाइक जब यूएस पूरा डोमिनेट करके जीत गया था. सही में. लाइक वो प्रॉपर ब्राजील है वुमेन्स फुटबॉल में. सही सबसे में. ज्यादा वो टाइम. ये हाँ भाई, देयर इज अ सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स कॉल्ड द कोचेस प्लेबुक. ओ. तो वहां पे दे आल्सो मेंशन अबाउट हाउ यूएसए's women's soccer team is such a dominant force throughout the history of the game. एंड ये जो अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी द 9th वर्ल्ड कप women's football world cup. And the USA have won 4 of these world फोर cups. टाइम. Yeah, and Japan, it's Germany who are leading in the second list with 2 wins. टू Japan and Norway are the other teams who have won one title each. यस. So, overall, there are some interesting names attached to the Football Women's World Cup. श्रेय भाई, आपको ओवरऑल कुछ इंटरेस्टिंग है जहाँ पे आपको लगता है कि दिस इज समथिंग जो आपको लगा जब पढ़ने के टाइम कि हाँ यार, दिस इज समथिंग वर्थ शेयरिंग अबाउट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप? एक्चुअली एलेक्सिस पुटियलिस है राइट, जो 2 बार हाँ, अभी जीत चुकी है. तो रियली होप कि स्पेन को हेल्प कर दे. मतलब हाँ, उनका फर्स्ट टाइटल के लिए राइट. हाँ, correct. And Spain, because Spain definitely is a country that has such a rich football रिच फुटबॉल. culture, and the men's team has won a World Cup as recently as in 2010, and I think 2008 and 2012 was also when the men's team won the Euros. And यस. so yeah, and it's interesting you mentioned someone who has a lot of appearances, क्योंकि मैंने भी थोड़ी तैयारी करी थी to just see who has हाँ. the most appearances in FIFA Women's World Cup history, ओके. and it is held by a retired American footballer called Christian Lilly, who अच्छा. managed 50 appearances across all 5 World Cups. देखो, क्रिकेट में तो हम बात करते ही हैं, द पर्सन हु हैज प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड कप्स इज सचिन तेंदुलकर. सचिन. बट now that it's a World Cup event, and let's be honest, women's sports in general has been getting so much traction, so much media coverage over the recent रिसेंटली. years. तो आपको थोड़ा मतलब क्या एक चीज है जो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? एक रिसेंटली विमेन्स यूरो हुआ था जहाँ पे इंग्लैंड बहुत ही वन साइडेड बहुत तरीके ही से अच्छा जीती खेली थी. थी. तो आपको ओवरऑल क्या मतलब व्हाट आर सर्टेन थिंग्स दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्रॉम दिस विमेन्स वर्ल्ड कप? इस बार सबसे ज्यादा टीम्स क्वालिफाई है फाइनल्स में. मतलब फाइनल ग्रुप है राइट. तो हाँ, 32 टीम्स है इसलिए और ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगा. और इस बार मैं पूरा फॉलो करने वाला हूँ. ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कोर कार्ड देख लिया, क्योंकि उनका फुटबॉल एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा फ्री फ्लोइंग है. और उनको हाँ, अभी लाइक उनको अभी मतलब उनका अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है. मतलब 1991 करेक्ट, तो ज्यादा मतलब ज्यादा भी पुराना नहीं है ना. तो उनको करेक्ट. बहुत सारा चांसेस है और उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया है इतने साल में. हाँ, लाइक 9 सीजन में ही उनका मतलब फाइनेंशियल साइड देखेंगे वो भी अच्छा है. और जो व्यूअरशिप आती है वो भी बहुत हाँ. अच्छी है राइट. या बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब इंग्लैंड की टीम बेथ 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 मीड मीड बोल जो. के जो प्लेयर यस. थी,
इंग्लैंड के लिए ये शी वाज 6 सच अ मतलब भाई क्या बोलते हैं इट वाज सच अ रेवलेशन व्हेन शी प्लेड ड्यूरिंग द यूरोस एट दैट टाइम you know there were so many good teams in the Europes in the European side only for women's football. I think the FIFA World Cup is going to be something that अगर आज तक लोग विमेंस वर्ल्ड कप नहीं देखते थे विमेंस फुटबॉल नहीं देखते थे दैट इज समथिंग दैट दे कैन प्रोबेबली प्ले ऑन एंड श्रेय भाई अगर आपने कोई हमारे पहले के एपिसोड्स सुने होंगे या देखे होंगे कभी या कोई हमारे जो लिसनर्स में से भी है जिन्होंने देखा है हमारे पॉडकास्ट में एक बार मनीषा कल्याण आई थी शी इज अ इंडियन हाँ, फुटबॉलर तो she अच्छा, mentioned about how important how much of an emphasis women's team pay on these multi-level tournaments मल्टी स्पोर्ट मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स मैं सॉरी नेशन बिकॉज हाँ क्योंकि उनको एनीवे इतने सारे आप विमेंस भूल जाओ इन इंडिया इवन द मेंस फुटबॉल टीम डज नॉट गेट सो मेनी मैचेस तो राइट, so having a World Cup for women, I think it is so big for every single team that participates. आपने जैसे कहा कि 32 teams are there. तो आपको क्या लगता है for the teams much more than a few matches, it is their opportunity to showcase their football on a global international level, right? यस यस, इतना सारा पूरा पूरा वर्ल्ड देख रहा है आपको, और आपको बहुत चांसेस मिल रहे हैं कवर हाँ ये करने को, अपना टैलेंट शोकेस करने को, और फिर हाँ और और उनका हिस्ट्री भी अभी जैसा बोला कि ज़्यादा ये नहीं हुआ है, तो उनको हिस्ट्री बुक में आने का चांसेस और जल्दी आने वाले हैं हाँ इंडिया के या लिए, इंडियन फुटबॉल टीम, बिल्कुल क्योंकि अब ना क्या है क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी आल्सो वांट द इंडियन वुमेन्स टीम टू फीचर इन द वर्ल्ड कप एंड राइट, फॉर द इंडियन ऑडियंस टू फॉलो एनी काइंड ऑफ वर्ल्ड कप इवेंट्स it is a huge differentiator if you know India is playing or not. It does not matter how good or bad India performs, but just the fact कि हाँ भाई कुछ ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे इंडिया वर्ल्ड कप इवेंट पे खेल रही है that's just a huge बूस्ट bonus. राइट, Yeah, absolutely. And जैसे कि हम शुरुआत में वर्ल्ड कप्स के बारे में कुछ स्टैट्स एंड फिगर्स के बारे में बात कर रहे थे आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क कि आपको पता है हु हैज द मोस्ट विंस बेसिकली विंस इन टर्म्स ऑफ मैचेस इन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप मोस्ट हिस्ट्री मोस्ट विन्स एक्चुअली, मोस्ट गोल्स तो यूएसए है, तो मोस्टली यूएसए ही रहेगा, राइट? हाँ, the most wins for a country is USA with 40 wins. But surprisingly आपने बोला कि there are most goals गोल्स USA से ऑल्सो, but ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि the most goals by a FIFA Women's World Cup history player is Marta. She's from मार्टा, Brazil. हाँ यस, मार्टा शी 16, सिक्स टाइम वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर मतलब उनको 6 बार फीफा की तरफ से विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है एंड शी हैज द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट goals scored in the World Cup with 17 goals. So राइट, overall, I just I'm बहुत है, sure जो यहाँ पे हमें भी आपको भी पता है मुझे भी पता है कि a lot of knowledge in women's football अभी तक नहीं है. Even though we are football followers, we are running this podcast. But आप बताओ आपके हिसाब से इन दिस वर्ल्ड कप आप क्या देखना चाहते हो दैट यू फील विल अलाउ पीपल विल लोग इसके वजह से और देखेंगे वेदर इट इज हाई पैक्ड एंटरटेनमेंट ऑन द फील्ड वेदर इट इज लॉट्स ऑफ गोल्स या आपको क्या लगता है कि भाई बिकॉज आई पर्सनली वांट दिस टूर्नामेंट टू बी फॉलोड बाय all Indian football fans. I mean, यस, not only those who are fans of Indian football, but also those Indians who are just fans of general football because जनरली, any football is football, right? तो इसलिए आपको बताओ आप आपके हिसाब से what is there something that you're looking forward to from this tournament? आई रियली होप कि मीडिया प्रॉपरली कवर करे इन इवेंट्स को, हाँ क्योंकि हम नॉर्मल रूमर भी देखते हैं, तो एक फैन पेज उसको पूरा पोस्ट बन दो, रील कुछ भी कर सकता है, बट वुमन के लिए उतना कवरेज नहीं होता, मतलब हाँ सोशल मीडिया से पकड़ो ना, तो मेन स्ट्रीम मीडिया से देख लो, और इंडिया हाँ में तो वैसे भी मेंस फुटबॉल को भी कम है, तो रियली होप कि अपना मतलब मेन फुटबॉल प्लेयर जो है इंडिया के, वो भी प्रमोट करे इस बार वर्ल्ड कप, और ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए। Yeah, absolutely. And I just hope that when this World Cup starts in a couple of weeks' time, it's just that many people find different reasons to continue to follow this.
एंड Yes. ऑफ कोर्स इन आर इंटायर सोशल मीडिया, जैसे कि दो लोग हमारे लाइफ में आए थे कल, श्रेय एंड दिव्यांश. Both of them put a lot of emphasis in trying to put up different types of real content, different types of written content, like Rahul. And if any of True. you want to, if any of you who follows women's football, please let us know how can we cover the event in different ways. uh, Yes. till next YouTube live, where probably we have a lot more to speak about women's football, the Women's World Cup, and many more names who are doing pretty well around women's football. Thank you everyone for taking out your time, and we will do this pretty soon. Stay around. Bye. Good Thank night. you. Thank you, sir.